हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन. So students, we have already started chapter 4 whole number, and today we will solve question number 8, exercise 4b. Okay, so let's understand what is question. The question is solve the following as fast as you can using the properties of addition and multiplication. क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में? जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, और आपको एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज का यूज करना है. देखो कैसे करेंगे. फर्स्ट वी कैन सी दैट व्हाट इज 365, 94 and 35. So we can use associative property in this question. How will we do this? If we add 35 in 365, what will we get? 400. Okay, so add this 365 plus 35. We will make a group of these two numbers and remaining 94 I will write it. This will come 400 plus 94 equals to 494. So that is the easy way to solve the question. Now look at the question number B. What is question number B? Question number B is 896 plus 423 plus 104. Now tell me, how can we solve this question easily? Easy method. Look at these numbers, 104 and 896. So if we add this, we will get 1000. So we will make a group of these two numbers. 896 plus 104. आपको इसको ऐड करना है प्लस 423. We are using associative property. Okay, आपको ग्रुप बनाना है. Now add this. We will get 1000 plus 423. So 1000 plus 423, 1423. That is the answer. Now look at the C question. Question number C. These two questions from the addition. Question number C is multiplication. So C question, look at here. 379 multiply 35 multiply 4. Now look, how can you solve this? अगर आप सिंपली सॉल्व करें, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो आप लोग 379 and 25% and then multiply 4, so we will get little bit difficult. Okay, so what we can do, first multiply these two numbers, 25 into 4. How will we do this? 379 as it is, multiply these two numbers, 25 multiply 4. 379 multiply 25 into 4, 100. So now you can see that is very easy to solve. 379 multiplied by 100 means 20. Okay, so that is the answer. 379, 37,900. That is the answer. So that is the way to solve the question. So question number D is your homework. Now we will solve question number 9. Okay, now students, look at the question number 9. Question 9 is so that ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है. You have to prove कि this side is equal to this side. Okay, so this is the side we call is left hand side. What we call left hand side. And this side is called as right hand side. You can see that this is at my right hand side. This is called right hand side. This is my left side. This is called left hand side. So आपको क्या करना है, इसको शो करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल. So how will you do this? Solution. First we will take left hand side. पहले आपको left hand side लेना है. Left hand side. What is left hand side? This is 693 plus 432 plus 412. So add this. पहले आपको ऐड करना है, ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं हम लोग. तो ब्रैकेट में क्या, बस इस दोनों को ऐड करना है. करो ऐड कर. 3 plus 2 5, 9 plus 3 12, 1 के
that is the left hand side. Now similarly solve right hand side. Right hand side. What is right hand side? 693 plus 432 plus 412. How will you solve it? First solve the bracket. पहले आपको bracket solve करना है. So 693 as it is plus 2 plus 2 4 3 plus 1 4 or 4 plus 4 8. Now add this number. 4 plus 3 7 9 plus 4 13 1 carry 8 plus 6 14 14 1 15 1537 1537. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे डिजिट भी सेम है. 693 693 432 432 412 412. तो डिजिट आर सेम. व्हाट आर द डिफरेंस? डिफरेंस कि यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप लिया गया ब्रैकेट बनाया गया और यहाँ पे लास्ट वाला ग्रुप का ब्रैकेट बनाया गया. सो दिस इज द बोलिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि आप ग्रुपिंग चेंज कर सकते हो बट आंसर विल बी सेम. ओके, आंसर डज नॉट चेंज इन एडिशन. ओके, so here we will write left hand side equals to right hand side. Proof and proof. ये आपको प्रूफ हो गया. We have shown that the left hand side equal to right hand side. So we will solve one more question. B. Question number C we will solve. We will solve question number C. Question number C is 85 multiply 30 multiply 4 equals to 85 multiply 30 multiply 4. ये आपको सॉल्व करना है. We have to show that both are equal. So similar, same place. We will solve. This is left hand side. This is right hand side. Digits are same. 85, 85, 30, 34, 4. What is the difference? Difference is कि हमने ग्रुप चेंज किया है. पहले टू डिजिट का ग्रुप लिया है. यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट का ग्रुप लिया है. How will you solve this? First take left hand side. This is 85 multiply 30 multiply 4. तो फर्स्ट क्या करोगे? We will solve bracket. Bracket को solve करना है. Solve this. 3 5s are 15. 1 carry 24 25. 2 5 5 0. After multiplying we got 2550. Now multiply 4. 0 4 5s are 20. 0 2 carry 4 5 is 20 22 2 carry 8 9 10. 10,200. That is the left hand side. Now solve right hand side. Right hand side. What is right hand side? 85 multiply 30 multiply 4. This is the right hand side. First solve the bracket. 85 as it is. 4 3s are 12. 120. Now multiply these two numbers. How will you do this? 12 5s are 60. 96 96 102 102 और 110. कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई किया. अगर आपको 12 की टेबल आती है तो 12 की टेबल से मल्टीप्लाई कर दो. इफ यू डोंट नो 12 टेबल, हाउ विल डू दिस? 120 85. इसको मल्टीप्लाई करो. You will get the answer 10,200. So you can see that here is 10,200. Here is also 10,200. So both are equal. So we can write left hand side equal to right hand side. You can hence proof. Hence proof. तो कुछ नहीं करना है. इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि show that आपको प्रूफ करना है. एक बार लेफ्ट हैंड साइड लोगे, एक बार राइट हैंड साइड लोगे. आंसर क्या आएगा? सेम. अगर आंसर सेम आता है तो आपको प्रूफ हो गया. अगर आंसर सेम नहीं आता है, इट मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो. So that is the way of solving the question. B of D is your homework. Now we will solve question number 10. Now students,
first understand the question. The number of students in section A, B, C of class 6 are 49, 38, 51 respectively. The number of students in section A, B, C of class 7 are 51, 49, 38 respectively. Find the number of students in class 6 and 7. So आपको यहाँ पे दो क्लासेस हैं 6 and 7. 6 के तीन सेक्शन है, कितने? तीन, A, B और C. There are three sections of class 6. और इसमें कितने स्टूडेंट हैं? सेक्शन A में है 49, सेक्शन B has 38 and section C has 51. These are the students of section A, B or C of class 6. And these are the students of section A, B, C of class 7, 51, 49 and 38. What we have to find? Number of students in class 6 and 7. Class 6 और 7 में कितने students हैं? How will you do this? First write total number of students in class 6. First हम find करेंगे कि class 6 में total students कितने हैं. We have seen that class 6 has three sections A, B and C. और student of 49, 38, 51 तो total कितने हो जाएंगे? 49 plus 38 plus 51. 49 plus 38 plus 51. Now we have to add this. How will we do this? We can see that 49 plus 51 is what? 100. So 49 and 51 कितना हो जाएगा? 100. So we can make group plus 38. That I am solving here. 49 plus 51 plus 38. मैंने इसका ग्रुपिंग कर दिया, इसको इसके साथ लिख दिया. ओके. In addition we can write like this. Now add this. This will become 100 plus 38 equal to 138. Okay. Now total number of students in class 7. 7 क्लास में कितने नंबर of students हैं? 51 plus 49 plus 38. 51 plus 49 plus 38. Now add this. So here the group is already given. The same thing. 51 plus 49. इसको ग्रुप बना दो. ये कितना हो जाएगा? 100. 100 plus 38 equals to 138. Now total number of students in class 6 and 7 together. 6 और 7 together total number of students कितने हैं? वो हम फाइंड करेंगे. कितना होंगे? 138 plus 138. 138 plus 138 कितना हो जाएगा ये? 276 कितना हो जाएगा? 276. These are the answers to total number of students in class 6 and 7 is 276. Now we will solve question number 11. Now students, look at the question number 11. What is question 11? The number of students in each class of a school is 25. The fees paid by each student is rupees 812 per month. If there are 40 classes in the school, what is the total fee collection? So क्या given है यहाँ पे? एक स्कूल है. In that school, per class there are 25 students. हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट है? 25 है. और टोटल क्लासेस कितनी है? 40 क्लासेस है. ओके. और यहाँ पे पर मंथ वन स्टूडेंट द फीस पेड बाय स्टूडेंट इज 812. कि एक बच्चा हर मंथ कितना फीस पेड कर रहा है? 812. एक क्लास में कितने स्टूडेंट है? 25. ओके.
और आपकी टोटल क्लासेस कितनी है 40। अब आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द टोटल फी कलेक्शन इन अ मंथ, कि स्कूल में एक मंथ में कितनी फीस कलेक्ट की जाएगी, वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखो, सॉरी कि देखो फर्स्ट लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each class equals to what 25. Number of students in each class how many 25 students एक class में. After that total number of students in how many classes total 40 classes, 40 such classes. कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 40, एक क्लास में 25 है तो 40 क्लास में कितना हो जाएगा 25 इंटू 40, 25 फोर का 100, 1000 स्टूडेंट, कितना है 1000 स्टूडेंट्स. फीस पेड by each student per month. Per month फीस पेड बाय ईच स्टूडेंट पर मंथ, हर एक महीने में कितनी फीस पे की जा रही है, कितनी फीस पे की जा रही है 812 इक्वल्स टू रुपीज 812. फीस पेड बाय 1000 such students per month, क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 812 इक्वल्स टू, एक बच्चा कितनी फीस पे कर रहा है 812 और इसमें टोटल बच्चे कितने हैं 1000 स्टूडेंट्स. ओके, तो 1000 स्टूडेंट कितनी फीस पे कर रहा है, एक बच्चा 812, हाउ मेनी स्टूडेंट 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई 812 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1812 123 8,12,000. तो कितना कलेक्शन हुआ, टोटल कलेक्शन इज 8,12,000 रुपीस. क्या जाएगा आंसर रुपीस. ओके, so that is the answer of question number 11. Now we will solve question number 12. Now let's look at the question number 12. Question 12 is find the products of the following using associative property of multiplication. Product means multiplication. Whenever you find the products, this is mean multiply. आपको multiply करना है. Okay. अब how will you solve this? Simple multiply. Okay. But we have to use associative property. आपको associative property use करना means आपको grouping बनाना है. ठीक है? कैसे करेंगे? अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो इन तीनों को, if you multiply simply, it will write down for you. But so what we will do? We will multiply these two first. I'll do this. 4 multiply 25, then multiply 2 5 1 8. So we are using associative property. We have make the group. So 4 multiply 25 100, multiply 2518. Solve this. What you will get? 2000 1800, 2,51,800. That is the answer. That is easy way. If we use associative property, the way of multiplication is very easy. Now look at the question number C. There are 4 numbers. Can you multiply? Simple method क्या होता है? पहले इसको multiply करो, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो. But what we will do? We will make a groups. 2 groups here. First, how will you solve this? 50 multiply 8 and multiply 4 multiply 250. What I did? I have made a 2 groups here. मैंने इसके numbers के 2 group बना दिए. पहले इनको multiply करो, we will get the answer. Then multiply this one, we will get the answer. Then multiply these two. Look at here. 50 multiply 8. 8 5 is 40. 400. What you got? 400. Now multiply
4 multiplied to 50. 0. 4 by the 20. 0. 10. 8,000. If you multiply 250 by 4, we got 1000. Now multiply this. Simple. 4 as it is. Count the 0. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. For the whole life. So that is the way how to solve the question. So now here question number B and D is your homework question. Now here the exercise 4B has been completed. Now we will solve question number 4C. Okay, question number 4C.